Good afternoon, students. Today we discuss the next alternative center of power, that is China. As we know, China is our neighboring country and it is the most populous country of the world and area wise rank on third position. In this concept we discuss that how China become an economic giant in the world. There are some predictors who called that China will cross the economy of United States of America in 2040. In its early phase, China followed the economic policy of socialism and communism. Everything was controlled by the state and there was no place for privatization. But after stagnation of economy of China, there were some steps taken by their premier like Zhou Enlai, Deng Xiaoping, and step by step they improved their economy. So let us start with the next alternative center of power, and the topic is rise of Chinese economy. The third major, first two we discussed about European Union and ASEAN. The third major alternate center of power is our immediate neighbor China. China's economic gains since 1978 are linked to its rise as a great power. What happened in 1978? In this year, China followed the policy of open door policy by Deng Xiaoping, the supreme leader of Chinese Communist Party. सन 1978 में देंग शोपिंग ने खुले द्वार की नीति को अपनाकर चीन की अर्थव्यवस्था को जीवित कर दिया. He opened the door for the whole world. Since reforms began, China has been the most rapidly growing economy. एंड सिंस 1978 जो चाइना का इकोनॉमी है वो आज सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी है, बिकॉज एट प्रेजेंट वी नो दैट चाइना इज़ द चीपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ दिस वर्ल्ड. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस यूएस एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040. यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 2040 तक जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्रॉस कर जाएगी. इट्स पोजिशन मेक्स it the driver of East Asian growth and gives it an enormous influence in the regional affairs. As we know that China is the permanent member of Security Council in the United Nations organization, and its huge economic power give its full control in the South Asian region. At the time of the inception of Chinese economy in 1949, after communist revolution under Mao Zedong, Chinese economy was modeled on Soviet model. So in its early life, China followed which model? The socialist model, which was followed by USSR. China even broke off its link with the capitalist world. चीन ने अपने सारे संबंधों को पूंजीवादी देशों से तोड़ लिया था. For this reason, it had to rely on Soviet help and its own resources for a brief period. और कुछ समय के लिए चीन को यूएसएसआर सोवियत संघ पर, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स पर डिपेंड होना पड़ा और अपने संसाधनों का प्रयोग करना पड़ा. द मॉडल वॉज क्रिएशन ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड हैवी इंडस्ट्रीज funded by the capital accumulated from agriculture. So this was the system which was followed by China, that by the surplus money which we gain from agriculture, and by that money we are founded or set up इंडस्ट्रीज इन द चाइना. चीन ने क्या किया? चीन ने सरप्लस मनी जो एग्रीकल्चर से कमाया उससे उद्योगों को लगाने का क्या किया था? प्रयास किया था. दिस मॉडल लेड चाइना to use its own resources and establish an industrial economic model that did not exist before. इस मॉडल से चीन पर क्या एक अच्छा प्रभाव पड़ा कि चीन में उद्योगों को जो लगना था वो आरंभ हो गया था, और जो पैसा आ रहा था वो कहाँ से आ रहा था? एग्रीकल्चर सिस्टम से आ रहा था. एंड दिस वाज ऑल कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, नॉट बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स.
चाइना एश्योर्ड सोशल वेलफेयर एंड एम्प्लॉयमेंट टू ऑल सिटीजन्स। चीन ने अपने सभी नागरिकों के कल्याण और उन्नति के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए। फर्दर इट मूव्ड अहेड बाय एश्योरिंग हेल्थ एंड एजुकेशन फॉर ऑल, एंड आफ्टर दैट शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी को दी। China moved ahead of all developing states with a growth rate of 5 to 6%. At that time, the highest growth rate among the developing countries with China 5 to 6%. However, the 2 to 3% annual growth rate of population meant that the growth rate did not match with the increasing needs of population. The major problem with China was that time that the population was increasing day by day, and that was the reason that if there was increasing 2 to 3% in population and the growth rate was 5 to 6%, it means that the population of the China country was not able to fulfill their basic needs or their maintain their living standard of life. Agriculture did not provide surplus for industry. कृषि में इतना ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पा रहा था कि वो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर सके। दस जस्ट लाइक सोवियत इकोनॉमी, चाइना ऑल्सो फेस फेयर इकोनॉमिक क्राइसिस ड्यू टू मिनिमल ट्रेड एंड लो पर कैपिटा इनकम। एज वी नो दैट चाइना ब्रोक its relation with the capitalist country, and the trade was minimal with other nations, and the agriculture sector was failed to produce surplus money to set up the industries. That was the reason that there was severe economic crisis due to the minimal trade and low per capita income. The crisis led Chinese to review their policy in 1970s. समय आ चुका था कि अपनी जितनी भी उनकी नीतियाँ थी उनको रिव्यू करने का, and from 1970 there was a period of reformation, सुधार का एक समय चला, and after that there were several changes took place in the economy of China. In 1972, it ended its economic and political isolation by establishing close relations with the United States of America. सन 1972 में अपने राजनीतिक और आर्थिक आइसोलेशन को छोड़ते हुए, अकेलेपन को छोड़ते हुए अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बनाए गए बाय द चाइना। प्रीमियर चाओ एन लाई in 1973 proposed for modernization in the fields of, उस समय चाओ एन लाई जिन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन दिए, साइंस, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, एंड बाय दिस 4 मॉडर्नाइजेशन ही वांटेड टू मेक चाइना ए सुपर पावर ऑफ दिस वर्ल्ड. In 1978, the supreme Chinese leader Deng Xiaoping announced open door policy and reforms in China. सन 1978 देंग शोपिंग जो सुप्रीम लीडर थे, चाइनीज लीडर थे, उन्होंने खुले द्वार की नीति को अपनाया और चीन के अंदर काफ़ी सुधार किए. व्हाट वाज द एम ऑफ ओपन डोर पॉलिसी? टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल फ्रॉम ओवरसीज, ताकि विदेशी मुद्रा बाहर से आ सके और देश के अंदर तकनीकी के अंदर निवेश हो सके. चाइना पायनर्ड अ न्यू पाथ इन एडॉप्टिंग ए मार्केट इकोनॉमी. अब चीन उस रास्ते पर चल पड़ा जिस पर पूंजीवादी देश थे. इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर ए शॉक थेरेपी, as we know that what was shock therapy? Shock therapy was given by International Monetary Fund and World Bank to revise the economy of post-Soviet nations. And what was the result of this shock therapy with Russia or USSR? That 90% of the public sector industries were sold out at throwaway prices. That was the big disaster for the Soviet Union and the Russia. चीन ने शॉक थेरेपी का रास्ता न अपनाकर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया पूरे वर्ल्ड के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को क्या किया जा सके, क्रिएट किया जा सके. फॉर दिस in 1982 agriculture was privatized, while in 1998 industries were privatized. It means that the two basic structure of economy were privatized by the Chinese leader. First they privatized agriculture and then industry. Trade barriers were removed in special economic zones. First of all, what do you mean by special economic zones? These are the zones which are set up by the government of a country to attract the foreign investors. And there are 3 large SEZs in China, and in India there are more than 100 special economic zones are set up by the government of India, but the size
of economy of the SEZS of China is much larger than our country India. विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करके चीन ने विदेशी निवेशकों को अपनी तरफ आकर्षित किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होने से वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर पैदा हो सके. स्टेट स्टिल कंटिन्यूज टू प्ले ए सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप अ मार्केट इकोनॉमी. अभी भी राज्य पूरे देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन. प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू अ रिमार्केबल राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम. जैसे ही एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन किया गया वैसे ही जो रूरल इनकम थी और जो फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड था वो काफ़ी क्या हो गया था, इम्प्रूव हो गया था. China's accession in the WTO in 2001. It is very important question. When China became the member of WTO, so in 2001 has been a further step in its opening to the outside world, because this organization, World Trade Organization, was found or was set up in 1995, and the main aim of World Trade Organization to liberalize the world trade, to remove barriers from the path of trade. And in 2001 China became the part of WTO, and it was a big step by the China to open its economy for the whole world. The integration of China's economy and the interdependence that this has created has enabled China to have considerable influence with its trade partners. आज चीन की अर्थव्यवस्था इतनी विशाल है, आज चीन के अंदर मोस्टली कंट्रीज़ के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जिससे चीन का जो प्रभाव है वो दूसरे देशों पर पड़ता है. बट वन बिटर फैक्ट एट प्रेजेंट, एज वी नो दैट सो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दे थिंक दैट चाइना इज रेस्पॉन्सिबल फॉर COVID-19, एंड there is a campaign which is starting here in our country India that don't use Chinese products. 59 apps of China has been banned by the Indian government. America was also against of the China, and so many countries of Europe, they supporting India at on the issue of Galwan Valley, and there is a disputed area between India and China. So at present so many countries, they pack up their business from China and set up in the different parts of the world. At present India is one of the favorite destination to set up the industry by the different nations.